हेलो एवरीवन। आज हम साइकिलिंग पे डिस्कस करने वाले हैं। साइकिलिंग बहुत ही यूनिक स्पोर्ट्स है, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट साइकिलिंग टुडे। साइकिल सेटअप करते वक्त हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है: सीट हाइट, सीट फॉर आफ्ट पोजीशन एंड रीच। सीट हाइट ऑप्टिमम होनी चाहिए। ज़्यादा सीट हाइट या फिर कम सीट हाइट दोनों ही नुकसानदायक होती है। सीट का अगर इंक्लाइनेशन 0 से 15 डिग्री के बीच में हो तो वो जो है बायोमैकेनिकली बैक पेन रिड्यूस करता है। जब भी हम साइकिल को पैडल करते हैं तो जो मेन मसल होती है वो होती है psoas एंड हैमस्ट्रिंग। टाइप्स ऑफ बाइसाइकिल्स। सबसे पहले आते हैं रोड बाइसाइकिल्स पे। उसके बाद आती है हमारी माउंटेन बाइक्स। उसके बाद हमारी आती है हाइब्रिड बाइक्स, जो कॉम्बिनेशन है माउंटेन बाइक्स का एंड रोड बाइक्स का। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सिटी बाइक्स विच आर मोर रिलैक्स्ड देन हाइब्रिड। Nowadays folding bicycles are also available which can be used during travel. Next है हमारी touring bicycles which allow us to carry lots of cargo. Electrical bicycles which have motors and batteries inbuilt. Cargo bikes which are small lorry of bicycles. Let's see 3D view of bones in our body. You can see how our body is organized and the curves we have in our spine. We have especially marked the lumbar spine and L5 vertebra for better references. You can see here in blue it is lumbar spine, how it is located. Bones are surrounded by various muscles and other soft tissue structures. There are high chances of muscles and nerve injuries in back. It is a 3D model in which how the body moves and which muscles are mainly responsible for the movement of the spine. Now let's warm up. First we have overhead stretches for shoulders. Spine stretch, which is for thoracic flexibility. Now hamstring stretch for lower limb. Pigeon stretch for gluteus and piriformis. Next we have quadriceps stretch. Let's move on to foot stretch. Please assess your body for the tone bilaterally. Unequal body strength can result in overloading of one leg or other regions of body. Some basic exercises to be done daily. Tabletop exercises to strengthen back muscles. Spine twist exercises for the flexibility.
V cycles for abdominals. Shoulder retractor exercises. Always use RISE for faster recovery. R stands for rest. I stands for icing. C stands for compression. And E stands for elevation of affected area. For any queries and appointment, please call on this number. Thanks for watching and subscribe.